Hello bachcho, let's read the question. The question says so that circumference of Bohr orbit for hydrogen atom is an integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit. ठीक है? So let's do the question. So बच्चों for hydrogen if this is the nucleus and in the Bohr orbit, ठीक है, in the Bohr orbit electron is revolving. यहाँ पे क्या हो रहा है, electron is revolving and this is your Bohr radius. ठीक है, this is Bohr radius. Bohr radius is r. ठीक है, and the wavelength associated with this electron, इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है दैट इज योर लैम्डा. ठीक है, सो व्हाट विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस ऑर्बिट. ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस ऑर्बिट इज 2 पाई आर. ठीक है, सो बच्चों अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, बोर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हाट वी नो, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई. ठीक है, वेयर एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v is velocity, r is the Bohr radius, n is principal quantum number and h is Planck's constant. So if you find out the value of 2 pi r, that is the circumference, 2 pi r is equal to 2 pi r अगर हम find out करेंगे this will be n h divided by mv. ठीक है, this is equation 1. now as you know according to de Broglie equation, ठीक है, de Broglie equation में क्या होता है, de Broglie wavelength को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू de Broglie equation, de Broglie wavelength lambda is equal to h divided by mv. ठीक है, this is equation 2. So in terms of h by mv what we can use lambda. ठीक है, इस वैल्यू का अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, इट इज 2 पाई r is equal to n into lambda. If you see this equation then this is the circumference. ये क्या है, आपके ऑर्बिट का circumference है. ठीक है, this is circumference. So if you see the circumference of the Bohr orbit is a integral multiple, this n value is a integral multiple. ठीक है, integral multiple of de Broglie wavelength. This is de Broglie wavelength है ना, this is de Broglie wavelength. So if you see this expression what you understand, क्या समझ में आ रहा है, that is the circumference of the Bohr orbit is an integral multiple of de Broglie wavelength that is associated with the electron revolving around the orbit. ठीक है, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, the electron that is revolving around the orbit has an de Broglie wavelength. if it is lambda then it is associated, lambda is related to circumference and the circumference का वैल्यू क्या हो जाएगा, it is n multiplied by de Broglie wavelength. This is what asked in the question, you have to prove it. ठीक है, so this is the concept. I hope you understood well. Best of luck.